Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I am going to talk about numerical and parallel resonance. Okay, this is part 2. Already I had developed part 1. This is part 2. Some other types of problem I am going to discuss. Okay, so this is the example number 1. Find the value of resistance R. This R show that resonance is impossible in the circuit. Okay, so I have to find the resonance condition. So you can see these two branches we have, this branch and this branch, both are in parallel. Okay, so parallel क्या होगा? If they are in parallel, so we can say 1 upon Z equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2. 1 upon Z equal to क्या होता है? Y equal to Y1 plus Y2, right now? So 1 upon Z equal to Y equivalent or Y equal to Y1 plus Y2. 1 upon Z1 equal to Y1. Okay. So you can say Y equal to Y1. Y1 क्या है? RC circuit is there. So RC circuit में क्या होता है? G1 and this is C minus negative है. RC मतलब R minus JXC. So for this is minus, तो यहाँ plus आ जाएगा, plus JB1, right? Plus this is RL circuit. So in RL circuit G2 minus RL circuit में यहाँ minus JB2. We have studied in basic electrical engineering. For RC circuit, susceptance, this is B, susceptance B will be positive. For RL circuit, this is RL circuit, this is susceptance will be negative. Okay, what is the value of G? G equal to क्या होता है? You know, we have studied in first year. G equal to होता है R upon R square plus X square. Susceptance B equal to क्या होता है? X upon R square plus X square. Okay, so here in this circuit, what is the value of R? R is 4 upon 4 square plus 5 square. 4 upon 4 square मतलब 16 plus 25. 16 plus 25, 41. Okay. So this is example number 1. Okay. क्या आएगा ये? R upon this फार्मूला लिखा है यहाँ. G इक्वल टू क्या होता है? R. R कितना है? 4 upon ये 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4 में 16. 41. ओके, 41. ओके, प्लस J B2. B1 क्या होगा? B1 मतलब यहाँ ये X अपॉन दिस सेम है. सो 5 अपॉन J 5 अपॉन 41. ये पार्ट इसका हो गया. इसका क्या होगा? प्लस इसका G कितना है? R है, तो R अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कितना है? 100 माइनस दिस इज RL सर्किट, सो ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव, माइनस J B कितना है? 10 अपॉन R square plus 10 square 100, right? So in this way you can say. So एक काम करता हूँ, I am separating the real part and imaginary part. Separate करते हैं, तो separate करेंगे तो क्या आएगा? Y equal to G और G2. Okay, so 4 upon 41 plus R upon R square plus 100. ये रियल पार्ट हो गया. प्लस J टर्म सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? 5 अपॉन 41 और ये माइनस है तो J बाहर आ गया तो माइनस 10 अपॉन R स्क्वायर प्लस 100. So I have separated, right? Now at resonance, the imaginary component will be 0, right? ना भाई, resonance condition में क्या है? It is purely resistive, so this is equal to 0. So that is the way. Okay, so अगर ये 0 है तो this term will be equated to 0. So you can say 5 upon 41 minus 10 upon
r square plus 100 equal to 0. Okay, so क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे you will get it. So equal to 0. So क्या आएगा 5r square plus 500, okay, equal to minus this. ओके एक काम करता हूँ आई एम जस्ट रबिंग इट. ओके तो मैं एक काम करता हूँ आई एम राइटिंग हियर 5/41 इक्वल टू 10/r स्क्वायर प्लस 100. राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5r स्क्वायर प्लस 500, राइट, इक्वल टू यहाँ जाएगा कितना 410. So you will get 5, if you solve it you will get 5r square equal to, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so 410 minus 500, so you will get minus 90. So r square equal to what, minus 90 upon 5 minus 18. So r equal to क्या आएगा, माइनस का मतलब होता है j square 18, राइट ना, तो you will get plus minus j18. I am getting the value of r plus minus j18, right? Okay, and you know r should be real or imaginary. R should be real, should be real. इसका मतलब है for r real नहीं आ रहा है, so for real value of r, अगर रियल वैल्यू आती तो ही आपको रेजोनेंस कंडीशन है. फॉर रियल वैल्यू ऑफ आर रेजोनेंस इज नॉट, हियर रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने रेजोनेंस कंडीशन लिया है, यहां से रेजोनेंस कंडीशन लिया है, इमेजिनरी कंपोनेंट 0 लिया है, आर की वैल्यू आपकी ये आ रही है प्लस माइनस j18, imaginary आ रही है. So for real value of r, resonance is not possible, right? So here you have to say comment r is imaginary. It shows that resonance is impossible for the value of r. So resonance is impossible. Resonance is impossible for this value of r. इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस आ ही नहीं रहा. Okay, that is the concept of this problem. I'm stopping it. Next problem I will discuss. All problems will be on the same line we have to solve. Okay. Okay, next problem. This is the problem number 2. Find the value of inductive reactance this at resonance frequency. So you can do it. Okay, so we know 1 upon z equal to what, 1 upon z1 plus 1 upon z2. 1 upon z क्या होता है, y equal to y1 plus y2. y equal to क्या होगा, y equal to y1 क्या होगा, RL सर्किट है तो R मतलब R G1, और RL सर्किट में ससेप्टेंस B will be नेगेटिव, राइट, प्लस y2 क्या है, RC सर्किट है तो G2, और फॉर RC सर्किट ससेप्टेंस B will be पॉजिटिव, याद रखना. फॉर RL सर्किट Z क्या होता है, R प्लस JXL, तो XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, बट फॉर RL सर्किट ससेप्टेंस B विल बी नेगेटिव, और यहाँ ससेप्टेंस B विल बी पॉजिटिव. G क्या होता है, कंडक्टेंस G इक्वल टू होता है R अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ससेप्टेंस B क्या होता है, फार्मूला X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. वी हैव studied in basic electrical engineering parallel circuit.
Okay, so I am not repeating it. Okay, and just this formula we know it. So G equal to क्या होता है R upon R square plus X square, 100 upon 100 square plus प्लस सॉरी माइनस प्लस होगा यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस जे बी वन क्या होगा बी वन क्या होता है एक्स एक्स मतलब एक्स एल अपान 100 स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ओके सेकंड पार्ट सेकंड सर्किट जी टू कितना होगा 25 अपान 25 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 1 626 और ये ससेप्टेंस है तो यहाँ सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कैपेसिटिव के लिए ससेप्टेंस क्या होगा पॉजिटिव तो प्लस जे एक्स कितना है 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 626 okay that is the b now for resonance condition for okay just wait I am separating the real part and imaginary part real part क्या होगा 100 upon 100 square plus xl square plus 25 upon 626 real part separate plus j term ये आगे ले रहा हूँ प्लस लिया है ना 1 अपान 626 और ये माइनस है माइनस एक्सएल अपान this plus xl square okay so I got it I have separated real part and imaginary part now for resonance condition yes the j term will be 0 no j term क्यों भाई under resonance condition imaginary term will be 0 okay so imaginary term 0 है right so कौन सी term 0 है ये so 1 upon 626 clear minus xl upon plus xl square equal to 0 or 1 upon 626 equal to xl upon this okay okay so क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा xl square plus this equal to this 626 xl okay so I got it so इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा xl square minus 626 xl equal to plus this equal to 0 this is the second order equation I am getting so you can get roots two roots मिल जाएंगे आपको second order है ना so you get two roots what are the two roots I am getting with the help of calculator I am going to use the calculator I am getting two roots okay so I think one will be positive and other will be negative so xl should be positive so I am getting two roots okay so I'm neglecting the negative roots only positive we will consider just I'm going to use the calculator and finding the roots okay so I'm getting 16.4 ohm that is the value if xl equal to 16.4 you will get resonance condition okay so that is the answer we have I'm not considering the negative value of xl okay so this is the positive value of xl I will get the resonance condition और अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है xl इक्वल टू क्या होता है 2 पाई fl और फ्रीक्वेंसी दी है तो यू कैन कैलकुलेट l आल्सो ठीक है so I'm stopping it here I'm rubbing it okay question number 3
मैं ये फार्मूला लिखा है ऑलरेडी, फिर से यूज करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी निकालना है एट रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी इज गिवन ओमेगा, ये क्या दिया है, रेडियन पर सेकंड, मतलब ये क्या दिया है, this this is omega is given 5000 radian per second. Okay, so same formula, y equal to y1 plus y2, y1 plus y2, right? Okay, so 1 upon z equal to 1 upon z1 plus 1 upon z2, y1 equal to क्या आ रहा है, g1 RL circuit में minus j b1, because it is RL circuit. For RL circuit, susceptance will be negative. Second is RC circuit, susceptance will be positive. So plus G2 plus J B2. Okay, यहाँ माइनस आएगा because RL है, तो RL में susceptance will be negative. For RC circuit, susceptance will be positive. So G1 क्या आएगा, 5 upon, okay, XL लगेगा. XL equal to क्या होगा, XL equal to what, XL equal to what, 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ होता ओमेगा, ओमेगा एल इक्वल टू व्हाट, ओमेगा कितना दिया 5000, एल इज गिवन, व्हाट इज एल, एल इज गिवन 0.6 मिली हेनरी, 0.6 into 10 raised to power minus 3, it is milli henry. So I am getting so I am getting 3 ohm. Just using the calculator I am going to use it. So 0.6, just wait, 0.6 exponential minus 3 into 5000, I am getting 3 ohm. Okay, so this is 3 ohm. So क्या आएगा, G1 कितना आएगा 5, y equal to 5, 5 upon 5 square plus 3 square, 5 upon 5 square plus 3 square. Okay, so 5 मतलब 5 square मतलब 25 और 3 मतलब 9, 25 plus 9 34, minus, sorry it is minus j 3 upon 34, 3 upon 3 square plus 4 square, sorry 5 square plus 3 square. Okay, so 34. Okay, second part, प्लस G2 कितना आएगा 4 upon 4 square 16 plus XC square, we don't know XC. Okay, 4 R upon R square plus X square, 4 upon 4 square plus XC square, और ये RC सर्किट है तो यहाँ प्लस J आएगा XC upon A. Okay, so that is the way. Now please I am going to separate the real term or positive term. So separate करने के बाद क्या आएगा 5 upon 34 plus 4 upon 16 plus XC square, real part separate, and imaginary part separate करोगे तो क्या आएगा J, ये प्लस लिया है तो प्लस XC upon 16 plus XC square माइनस ये J बाहर लिया माइनस 3 upon 34, right? Now for resonance condition, the J term will be 0. Why it is 0? Because under the resonance condition it is purely resistive, so this term will be 0. So you will get this equal to 0. So you will get XC upon 16 plus XC square minus 3 upon 34. Okay, so equal to 0, तो क्या आएगा x3 XC square, if you solve 3 into XC square,
or you can say xc upon 16 plus xc square equal to, you can say, 3 by 34. This minus is equal to 0, so this equal to this. So क्या आएगा, 3xc square, if you solve it, 3 into x square plus 48 equal to 34 xc. So if you divide by 3, so क्या आएगा, xc square minus 34 upon 3 क्या होगा, 34 upon 3, just wait. I am dividing this equation, both equation equal to by 3, so I am getting 34 by 3, I am getting 11.33. वो ये इधर आएगा तो minus 11.33 xc plus यहाँ if you divide this by 3, so 16 equal to 0. So I am getting, this is the second order equation. Okay, so if you solve it with the help of calculator, if you find the roots, so you will get two roots, one will be positive and other will be, because यहाँ negative term is, so I will get one positive and one negative, so I don't want negative term, so I want only positive. So if you solve it, you will get x equal to, I am getting x equal to what, just wait, I am calculating it. Second order है ना, second order, degree 2. So I'm good, just I'm going to use it. X equal to, you try to get it. I'm not in position to get it through the calculator. Okay, so find the value of xc, but I am getting c equal to, क्या होता है xc equal to what, x equal to what, 1 upon omega c. Omega is given 500, 5000, so I'm what, 1 upon 5000 into xc. So I'm getting two values of c. I'm getting c equal to 121 microfarad and 20.6. So I am getting two values of c, okay, xc. Okay, so from there I am getting the value of c equal to 121 microfarad or 20.66 microfarad. So that is the way of solving it. Okay, सिर्फ xc की वैल्यू आपको निकालना है कैलकुलेटर पे. I'm not in position, in our calculator I'm not in position to find it. Okay, so do it. So this is over, I am stopping it here. First of all I am rubbing it.
Okay, so this type of problem I have solved. Okay, so generally examiner ask this such type of problem. This type of problem you can use for this competitive examination also examiner may ask. Thank you very much for listening me carefully. Thank you.